मौके है फैमिली लेकर निकल जाओ, सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। What do you think about movies? Are they only means of entertainment, refreshment, or just time pass with some fun? तू सच बोलता है। Not really. Movies can be a motivational and inspirational source to steer you and wake up you to do something important and stand against every obstacles come on your way. जिंदगी? You mean life? You're right, uncle. इसके बारे में सोचना तो चाहिए। It is not sure which thing can hit you to encourage and show you a perfect path for your brightest career. It could be person, book, song or movie. Among them, movies are the best alternative to choose to get some motivation fight against all the odds. देख ऐसा कॉन्फिडेंस में जाने का मुन्ना भाई के माफिक। किसी ने पहचान लिया तो? तेरी ऐसी की तैसी मानो थकेले। Let us make a list of some Bollywood movies that are only inspire or motivate you to be ready for everything in life and also can help you to get boost in your career graph. Here, Media Hit is making a list of top 10 Bollywood motivational and inspirational movies. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। Number 10, Border. जिसे आप पागलपन कह रहे हैं वो विश्वास से पैदा होता है और मेरा विश्वास ये है कि जिंदगी और मौत वाहेगुरु के हाथ में है और मेरा वाहेगुरु दुश्मन के साथ नहीं मेरे साथ है। The Battle of Longewala, Major Kuldeep Singh, Sunny Deol and his battalion of 120 soldiers were ready to fight with near about 2,000 Pakistani soldiers with their tank regiment. India was having no tank regiment. They had no armed forces, either just 120 soldiers and their courage. अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी धरती मां पर नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहे। Major Kuldeep Singh and their battalion didn't step backward and fight to the nearly death, but didn't surrender their motherland in the hand of the enemies. They fight till the end, and when the first flight of Air Force reached the battlefield, all the Pakistani soldiers ran away. A tribute and a salute to all those 120 soldiers who had fought with 2,000 Pakistani soldiers. दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। Number 9, Prahar. कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार हो जाओ। कमांडो पीटर डिसूजा जम के लिए तैयार नहीं सर। यू इडियट, इरादा पक्का करो। इरादा पक्का है सर, जंप नहीं करूंगा। तो फिर लटके रहो वहाँ। Prahar is a story of Major Chavan, a tough and strange soldier trained to destroy the enemy. He can see the enemy on our border but is unaware of invisible enemy within ourselves. When one of Major Commando Peter D'Souza is killed, he is shown the harsh reality revolving around us, the enemy within ourselves. The battlefield changes and a Major Chavan makes his final attack on enemy within this crumbling society. किसकी ड्यूटी करते हैं आप? कौन तनख्वाह देता है आपको? किसका काम करते हैं आप? आपके माँ के साथ भी ऐसे ही होता तो आप इसी तरह सड़क पे पैदा होते और मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना वो आप है और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। Number 8, लक्ष्य. ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे, जिंदगी में कोई काम भी करोगे? क्यों नहीं करूंगा डैड, लेकिन मैं काम कोई भी करूं अच्छी तरह करना जरूरी है। अगर मैं साइंटिस्ट बन जाऊं लेकिन अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनूं तो क्या फायदा? भले घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा तो कोई मतलब है। Karan is a lazy good-for-nothing who lives on generated income of his father and elder brother at their family business. मुझे क्या करना है ये क्लियर हो गया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? Are you serious? रोमी, मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। Karan's days hang out with buddies and romance a woman named Rumi. When he watches an action movie, he decided to enlist in the army with a friend, but basic training proves to be too much of a bother and he shortly abandons it, thus making him lose respect on the home front. Rumi also stopped respecting him. Karan decides he must rejoin the army and show his family and Rumi that he too is focused upon the path he has to take in this lifetime. Karan is swept into a heated battle to capture an important peak. He knows very well that this might just be a great chance to serve his country and look the world in its face. या तो ये मिशन कामयाब होगा या फिर मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, ये मैं वादा करता हूं सर। गुड लक। Number 7, Neerja.
मॉडलिंग इतनी अच्छी चल रही तेरी, ऐसे मजदूरों वाला काम करना जरूरी है। ये एयर होस्टेस की जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? I like my job. Neerja Bhanot, Sonam Kapoor is introduced to us as a huge Rajesh Khanna's fan. She is an independent girl who juggles two careers of being an air hostess and a model with immense dedication. With a supportive family who are proud of her. अगर ये शांत रहेंगे और आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, इनको तसल्ली मिलेगी तो आपका ही काम आसान जाएगा। सुनिए, प्लीज। Neerja's life is near perfect until her destiny takes a detour. On her first flight as a head purser, Neerja is faced with an untoward event. Flight Pan AM73, which is a New York-bound flight via Karachi, is hijacked at Karachi International Airport. With 300 passengers on board and terrorists with an agenda, Neerja's life is in danger. How her quick thinking and dedication to her job saved the lives of those on board is what the story focuses on. So please. नो वो तो सर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ, जैसे आप निभा रहे हो। Number 6, लगे रहो मुन्ना भाई। देख रहे हैं बट्टी कुट्टी, अभी लाइफ में ना एक दूसरे का हेल्प करना मांगता है क्या? अभी तेरे पास बापू का फुल टू इन्फॉर्मेशन है, अपने पास नहीं है, इसके तो चाहिए ना मेरे को, है कि नहीं? अभी तेरे को कभी शकील एड़ा, दगड़ू दादा, अफजल टोंडा, इन लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने को आके पूछना, अपन ना नहीं बोलेगा कसम से। अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे, क्या अपने पास रख के सड़ा रहा है? In this sequel to highly successful and much appreciated Munna Bhai MBBS, the affable goon Murli Prasad Sharma Akka Munna and his trusted ad circuit are employed by Lucky Singh, who is an unscrupulous builder. Munna is in love with the voice of a radio jockey named Janvi. He gets to meet her in person after winning a radio contest and decides to learn about Mahatma Gandhi's life and principle to win her heart. But then something happens which is quite inexplicable. Munna begins to see Mahatma Gandhi in person, who wants to help him. Later, when Janvi's house is seized by a corrupt Lucky Singh, Munna embarks upon using Gandhi's principle of truth and non-violence to bring about a change in Lucky Singh's heart. बापू बोला, अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले, देख नहीं मारा ना? भाई इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा अपन को। Number 5, मांझी। ये भीतर का घाव, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। Dashrath Manjhi was a poor man from the lowest of the low caste living in remote village, cut off from the world by a rocky mountain range. Life for him was a daily struggle for survival. He loved his wife Fugunia beyond belief. One day while climbing the mountain to bring him food, his wife slipped, fell and died. Overwhelmed by grief, Dashrath decided to carve out path through the mountain so that no one else would suffer his fate. For 22 years all by himself with just a hammer and a chisel, he hammered away at the rocks till the path was carved out from the mountain. अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का। Number 4, उड़ान। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है पहनना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? After being abandoned for 8 straight years in boarding school, Rohan returned to the small industrial town of Jamshedpur and find himself closeted with an authoritarian father and a younger half-brother who he didn't even know existed. Forced to work in his father's stills factory and study engineering against his wishes, he strives to forge his own life out of his given circumstances and pursue his dream of being a writer. कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? मेरी शादी से खुश नहीं है? नहीं, बहुत खुश हैं सर। अच्छा आप शादी कर रहे हो, आपकी भड़ास कहीं और निकलेगी और अर्जुन को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। Number 3, जो जीता वही सिकंदर। बस जरा सी कसर रह गई रामलाल, वरना रतन ने शेखर को हरा ही डाला था। नहीं गुबे जी, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जो जीता वही सिकंदर।
The biggest sporting event for the school town of Nainital is the annual cycling race. For the past 2 years, the cycling race has been won by the arrogant Shekhar Malhotra Deepak Tijori of Rajput College. Sanjay, Amir Khan and Ratan Mamik Singh are brother who attend model and run a small local cafe. Their father Kulbhushan Kharbanda is obsessed by a desire to see Ratan become the cycling champion. Ratan on his part is the ideal son and elder brother to Sanjay. Good is everything he does and has been the runner-up to Shekhar in the cycling race. Shekhar and his friend injured Ratan, almost killing him to keep him out of the race. It is at this point that Sanjay realizes he has to get serious and responsible in life and he enters the cycle race to do what a man must do. तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो ये सब भूल जा। मैंने तेरे लिए नई साइकिल तैयार की है, इसे ले और कल की रेस में पूरी कोशिश करना। Number 2, मुन्ना भाई MBBS. अरे अपन क्या करेगा? एक बॉडी को 50 जन घेर के खड़े ले तो घंटा देखने को मिलेगा। 4 दिन से अपन उंगली देख रहा है, टांग में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं। अपन को ना एक फुल टूस डॉक्टर बनने का है, स्पेशलिस्ट नहीं कि गले के डॉक्टर को मालूम नहीं कि घुटने में क्या चल रहा है। Murli Prasad Sharma is a local gun in Mumbai, popularly known as Munna Bhai. He has kept his real identity secret from his parents, who thinks that their son is a doctor. जहर खाया है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए, इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की वेट करेगा? बोल! Munna's parents arrive in Mumbai for their annual visit and his father meets an old acquaintance, Dr. Asthana, by chance. They want to fix Munna's marriage with Dr. Asthana's daughter Suman, Chinky Asthana. But Dr. Asthana comes to know about Munna's real identity, reveals it to his parents and humiliates them. Heartbroken, they leave for their hometown. Munna swears revenge upon Dr. Asthana and embarks upon getting an admission in medical college to become a doctor. The story now focuses on how people in the hospital need to be loved and appreciated. चाकू नहीं है, hold it pen like a pen. Number 1, Airlift. बच्चों के हाथ में गन्स दे रखी है उन लोगों ने। फौद अल सैयद क्रेन से लटका हुआ था, तो रंजीत कटियाल क्या चीज है? Rich Indian origin businessman Ranjit Katyal Akshay Kumar love profits and dislike the idea of India. वैसे दिल्ली को भी क्या कोसना, यहाँ बहुत से जिनकी गिनती में 10 दिन पहले दिल्ली नहीं थी, कुवैती समझने लगे थे अपने आप को। आदमी की फितरत ही ऐसी है इब्राहिम, चोट लगती है ना तो आदमी माँ ही चिल्लाता है सबसे पहले। But Ranjit's golden life in the desert crumbles when Iraq forces invade Kuwait. Suddenly people are savagely shot in the streets, house looted, building blown up, tanks taking over, chopper hovering maliciously amidst minarets. Iraq Major Halaf offered Ranjit and his wife Amrita Nimrat buy $1 million ticket to leave with their child. But Ranjit's also looking after thousands of Indians, desperate as exits Kuwait. What happens when Ranjit takes responsibility for getting 1,70,000 Indians home? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल पर मेरी बात चल खोली रही जी, है। आपको जो करना है जल्दी करिए, बस जॉर्डन का बॉर्डर खुलवाइए क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। We have done with this time countdown. If you think that we have missed something, you can give your feedback and suggestion on our comment section. This section is all yours. And if you like this video, please hit on like button, and for more videos and updates, please subscribe to our channel Media Hits. I'd like to wish you the best of luck. Any questions? Yes sir. Yes. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?